नमस्कार दोस्तों, जी फॉर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आप दिखाएंगे कि जो हमने हेक्साकॉप्टर बनाया था उसका एक्चुअल में क्या फ्लाइट टाइम आ रहा है। मैंने एक यहाँ पे जो बैटरी लगाई है 10,000 mAh की पुरानी बैटरी है, तो इसमें अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 8,000 mAh बची हुई है। तो आज हम इसमें फ्लाइट टेस्ट करेंगे। हालांकि हवा भी चल रही है तेज, तब भी हम चेक करते हैं एक बार क्या फ्लाइट टाइम देती है। अभी तक प्रॉपर फ्लाइट टाइम हमने चेक नहीं किया है, तो बैटरी को हम प्लग कर देते हैं। बैटरी लगा दिया, हम रिमोट को ऑन कर देते हैं। अब हमने रिमोट ऑन कर लिया है, देख सकते हैं जीपीएस भी आ चुका है। कंपास एरर आ रहा है, थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज कर देंगे। कंपास एरर नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, कैलिब्रेट कर देंगे एक बार। कैलिब्रेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको फॉलो करेंगे। इसको घुमाएंगे, एक बार इसको लेफ्ट साइड से घुमाएंगे। ये हमारा कैलिब्रेट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ ग्रीन हो चुका है।
थोड़ा सा इशू हो गया है, तो प्रॉपर यहाँ पे इसका देखिए स्क्रू थोड़ा सा निकल गया था, तो फ़्लाइट टाइम हम चेक नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट टाइम फ़्लाइट टाइम हम चेक करेंगे। एक ही बोल्ट ख़त्म हुआ था, तो अभी अप्रोक्स एक ही बोल्ट ख़त्म हुआ है। 25 से स्टार्ट हुआ था, कुछ समथिंग 25 से स्टार्ट हुआ था और 424 पॉइंट कुछ में ये अभी बैटरी बची हुई है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कितना फ़्लाइट टाइम देती है। और इस वीडियो में प्रॉपर नहीं हो पाया है, ये स्क्रू निकल गया था इसलिए आप दिखा रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो तो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छा वीडियो बना के दिखाऊंगा।